Hello everyone, welcome to Sahib Literacy. Now we are here with the new video which is about the exercise portion of the first year English poem Night Mail, which is written by W.H. Auden. In this video we are going to have the discussion on the reference to the context with explanation in text. Means के किस किस्म का कंटेंट जो है एक्सप्लेनेशन में जो है हम एक्सप्रेस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. आपको पता है कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सारी पोम के लिए जो है वो एक ही होता है. यानी नाइट मेल पोम है हमारे पास तो उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सेम ही होगा. तो ये मैंने एक ही पेज पे लिख दिया और उसके बाद जो है वो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है. These lines have been taken from the poem Night Mail written by W.H. Auden. Context: the night mail train travels far and wide carrying letters and messages for all. It goes through hills and fields without disturbing anyone. It brings good and bad news but always arrives on time, no matter the weather. यानी कि ये मैटर नहीं करता कि जिस किस्म का भी वेदर है या जिस किस्म की भी फील्ड से जगहों से उसका गुज़र होता है वो टाइम पे पहुंचती है. द ट्रेन हेल्प्स कनेक्ट पीपल एंड डज इट्स जॉब वेल. तो आगे एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं स्टेंजाज की बेस पे. एक्सप्लेनेशन लाइंस 1 to 4. वैसे तो पिछली वीडियोस में जो है हमने लाइंस को डिस्कस किया था, पर यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ लाइंस 1 to 4. दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर. लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर. In this stanza, the poet talks about the night mail train arriving. The poet says that the train is crossing the country's borders carrying many letters, checks, postal orders, and other mail. The train is bringing letters for everyone, rich people, poor people, and even for the little shop on the corner. It's also bringing a letter for the girl who lives next door. The poet wants to show that the night mail brings letters for people from all parts of life. तो ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन 1 to 4 लाइन्स की इन टेक्स्ट. आगे का स्टेंजा देखते हैं. लाइन्स 5 to 8 एक्सप्लेनेशन है हमारे पास इन दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द लाइन्स. Pulling up, B-talk, a steady climb, the gradients against her, but she is on time. Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white stream over her shoulder. In this stanza, the poet talks about the night mail train traveling through different kinds of places. The poet says the train pulls its cars uphill and climbs steadily. Despite obstacles means difficulties, hurdles along the way, the train arrives on time. These lines reminds us of the importance of being on time and following a schedule. The train does not waste any time and keeps moving efficiently. The train passes through cotton fields, meadows and grassy areas. It uses coal for power, which is why it sends out white smoke behind it. तो ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन इन टेक्स्ट लाइंस 5 to 8. अगली एक्सप्लेनेशन है हमारे पास लाइंस 9 to 12 इन टेक्स्ट. लाइंस हैं हमारे पास. स्नॉटिंग नॉइजली शी पासेस silent miles of wind-bent grasses. Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. So here we have the explanation in text. In this stanza, the poet continues to describe the night mail's journey. The train moves with determination, crossing miles of grassy fields as it passes through the quiet, wind-bent grasses. It makes noise. This noise announces the train's arrival. The birds sleeping in their nests wake up but are not scared.
They know the train is just doing its job. They simply turn their heads to watch it, looking at its empty coaches. The poet uses the term blank face to show that the coaches have no passengers. Next explanation, lines 13 to 16 in text explanation. The lines are: sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. In the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. So here we have the explanation in text. In this stanza, the poet describes how sheep, dogs, and other animals react to the arrival of the night mail. The poet says that the animals can't change the train's path, so they just keep sleeping with their paws crossed. They know the train does not concern them, so they don't react to its arrival. Life on the farms remains unchanged. The people continue to sleep knowing the train will pass by. However, a jug in a bedroom shakes a little as the train goes by. ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन, तमाम लाइंस की इन टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर की रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन आती है एग्ज़ाम में। सो वी हियर वी हैव क्वेश्चन आंसर पोर्शन। सो लेट्स हैव अ लुक। एक्सरसाइज में जो है वो क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए गए, तो यहाँ पे जो है हम जो पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं नाइट मेल पोम से, उनको हम देख लेते हैं। हु रोड द पोम नाइट मेल? Weston Hook Auden wrote the poem Night Mail. What does the night mail bring? The night mail train carries important things like money, orders, checks, and letters for people from all walks of life. So the next question is, what is the reaction of birds on the arrival of night mail? The birds turn their heads to see the train, but they don't fly away. They stay safely in their nests in the bushes without any fear. The next question is, what is the effect of night mail on life in the farms? यानी फार्म लाइफ जो है उस पे नाइट मेल के गुजरने का क्या असर होता है? The night mail train does not bother the people and animals on the farms. They know the train well and are used to it. So when it passes by, they just keep doing their work as usual. So question number 5, next question is, what is the reaction on sheep and dogs on the arrival of night mail? The sheepdogs don't even look up at the train. They just keep sleeping, resting their heads on their paws. The next question is, from where does night mail pass? The train goes through plains, hills, farms, and fields. She sees many different ups and downs on her journey. यानी कौन कौन सी जगहों से उसका गुज़र होता है? मैदानों से भी, पहाड़ी इलाका से भी, खेतों में से भी, और फार्म हाउसेस के साथ से भी, हर जगह से उसका गुज़र होता है। What is the theme of the poem Night Mail? इन शॉर्ट टर्म मैंने इसका थीम लिखा है, The night mail train delivers mail to everyone, everywhere. It's always on time and brings people together without disturbing them. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया था कि it is about the connections, showing the connections of the people among them. आगे क्वेश्चन है, what is Beatock? Beatock is a steady climb. It's a village in Scotland. तो अगर MCQs के तौर पर आए तो स्टेडी क्लाइंब जो है वो टिक करना है अगर ऑप्शन में आए। तो इसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बीटॉक की, तो वो जो है वो स्कॉटलैंड का एक विलेज है। व्हाट इज़ मूरलैंड बोल्डर? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोम, इट्स लाइकली यूज टू डिस्क्राइब द ट्रेन पासिंग थ्रू अ रग्ड, रॉकी एंड ओपन लैंडस्केप। यानी कि मूरलैंड बोल्डर से क्या मुराद है कि ऐसी ज़मीन जो पथरीली हो, बंजर हो, पहाड़ों के जो है वो थोड़े थोड़े जो है या बड़े बड़े टुकड़े यानी पत्थर जो है वो गिर के उसके ऊपर पड़े हों, तो इस किस्म की जो है वो ज़मीन मूरलैंड बोल्डर कहलाती है या मूरलैंड कहलाती है। बोल्डर स्टोन को कहते हैं। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स की समझ आई होगी।
These are very important for your exams point of view. And have a good time. See you in the next video. Thank you so much. Stay blessed.